लोग इसे क्रिकेट का भगवान मानते हैं। इनके साथी खिलाड़ी इन्हें सर जी कह के पुकारते हैं और जब स्टेडियम में इसका बल्ला चलता है तो हर तरफ एक ही आवाज होती है, सचिन सचिन आला रे। In towards Sachin Tendulkar, he'll be the key wicket of course. 24 अप्रैल सन 1973 को रजनी और रमेश तेंदुलकर के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रमेश तेंदुलकर ने अपने फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर के नाम पर रखा। म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन के नाम पर इस लड़के का नाम सचिन रखा गया। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम के पल को इस दिल को सजा दे तो। पर इस नन्हे सचिन के इरादे कुछ और ही थे। ये संगीत की दुनिया में नहीं, खेल की दुनिया में अपना नाम करने वाला था। कौन जानता था कि एक छोटी सी उम्र में ये क्रिकेट की दुनिया में एक धमाका कर देगा। सचिन तेंदुलकर के बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने उन्हें काफी प्रोत्साहित किया। सचिन तेंदुलकर बचपन में ही घंटों नेट्स पर प्रैक्टिस किया करते थे और इनके गुरु आचरेकर 1 रुपए का सिक्का स्टंप्स के ऊपर रखते थे और शर्त यह होती थी कि जो भी बॉलर सचिन को आउट कर देगा वो ये 1 रुपया अपने साथ ले जाएगा और सचिन नॉट आउट रहा तो वो 1 रुपया खुद ले जाएगा। और ऐसे करते करते सचिन के पास 13 ऐसे सिक्के हैं जिसे सचिन सबसे बड़ा अवार्ड मानते हैं। क्या करेगा बढ़ के? मैंने टाई पहन के बड़ा आदमी बनना है, नाम कमाना है। मेरे कोच ने मुझे बहुत सारे प्रैक्टिस मैचेस कराए, तो उससे एक मैच खेलने के लिए जो टेम्परामेंट की ज़रूरत होती है प्लेयर को, वो सीखने मिला मुझे। 16 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया और पहले इम्तिहान में उनके सामने थी पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने नन्हे सचिन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और इसी मैच में एक बाउंसर ऐसी आई जो सचिन तेंदुलकर की नाक से जाके टकराई और सचिन की नाक से खून बहने लगा। पर अपने दर्द की परवाह किए बगैर यह नन्हा क्रिकेटर, जिसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 16 साल थी, खेलता रहा। ऐसा माना जाता है कि जब शेर घायल हो जाता है वो और भी खतरनाक बन जाता है। कुछ ऐसा ही सचिन के साथ हुआ। पहले मैच में आई बाउंसर ने जरूर सचिन को चोटिल किया, पर उसके बाद सचिन ने जो धुलाई की है वो आज भी दिग्गज गेंदबाजों को याद है, चाहे वो शेन वॉर्न हो या मुरलीधरन, ग्लेन मैकग्रा हो या एलन डोनाल्ड। इन सब की पिटाई की कहानी सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स में सुनाई देती है। 100 सेंचुरीज का रिकॉर्ड हो या फिर पहला ऐसा क्रिकेटर जिसने एक दिवसीय क्रिकेट में 200 रन बनाए हो, सचिन तेंदुलकर के नाम पर तकरीबन हर एक रिकॉर्ड है। सचिन ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जो वनडे इंटरनेशनल्स में 10,000 रन तक पहुंचे। 10 के बाद 11, 12, 13, 14 और ये गिनती बढ़ती गई। 18,000 रनों तक सचिन तेंदुलकर पहुंच गए। एक वक्त ऐसा भी था जब अकेला सचिन खेलता था और बाकी सब पवेलियन लौट जाते थे। शारजाह के मैदान पर आज भी ऑस्ट्रेलियंस को अपनी धुलाई याद है। जो टीम मीटिंग होती है वो मैचेस कैसे जीतने की होती है, रिकॉर्ड्स कैसे ब्रेक करने की, वो नहीं होती। और बहुत जल्द सचिन वाइस कैप्टन बने, वाइस कैप्टन से कैप्टन, लेकिन उनकी कैप्टनसी इंडियन टीम को बहुत रास नहीं आई। सचिन के सीनियर प्लेयर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक बार ये बात कही थी कि सचिन की कैप्टनसी में हम नहीं जीतेंगे, छोटे के नसीब में जीत नहीं है। एक तरफ सचिन रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़ रहे थे तो दूसरी तरफ वो अपना दिल भी संभाल रहे थे और उनके दिल पर कब्जा किया डॉक्टर अंजलि ने, जिनसे सचिन तेंदुलकर ने 24 मई सन 1995 में शादी कर ली। सचिन और अंजलि के 2 बच्चे हैं, बेटी सारा जिसका जन्म 12 अक्टूबर 1997 में हुआ और बेटा अर्जुन जिसका जन्म 24 सितंबर सन 1999 में हुआ। गौर करने वाली बात यह भी है कि अंजलि सचिन से उम्र में 6 साल बड़ी हैं। बीच बीच में सचिन के आलोचकों ने यह भी कहा कि सचिन को रिटायर हो जाना चाहिए, जिस पर अक्सर सचिन का बल्ला ही बोलता था। पर जब प्रेशर ज्यादा पड़ जाए तब सचिन खुद बहुत ही नम्रता के साथ इस बात का जवाब देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रिटायरमेंट कब लेनी है ये मुझे डिसाइड करना है, क्योंकि मैंने क्रिकेट कब स्टार्ट किया है तो वो तो किसी और ने डिसाइड नहीं किया था। मैं
मेरी हिम्मत पे, मेरे कोच के गाइडेंस से, मेरे फैमिली के गाइडेंस से और खुद की मेहनत से खेला हूँ। मुझे जो रिटायरमेंट का जो सलाह दे रहे हैं उन्होंने कभी टीवी लेके नहीं आए। सचिन ने सबसे बड़े ब्रांड्स ही एंडोर्स नहीं किए हैं, बल्कि सबसे बड़े टूर्नामेंट्स भी जीते हैं, जिसमें सन 2011 की वर्ल्ड कप विक्ट्री सबसे ऊपर आती है। India lift the World Cup after 28 years. ये सचिन के बचपन का सपना था कि इंडियन टीम के लिए वो वर्ल्ड कप जीतें, और सन 2011 में जब वर्ल्ड कप जीता तो सचिन की आंखों से आंसू बह निकले और सचिन के साथ खुशी में पूरा देश रोया। Were you able to control your tears? No, not really. Yeah, they were happy tears, so I wouldn't mind, crying. और जब छोटे छोटे बच्चे सचिन से पूछते हैं कि हमें भी क्रिकेट खेलना है तो कुछ टिप्स दीजिए, सचिन इस अंदाज में उनके सवाल का जवाब देते हैं। My only tip to you is chase your dreams. You need to dream. If you dream of playing for India, chase it and work hard and enjoy the game. Above all, don't find shortcuts. There will be difficult phases also. Don't worry about it. Just enjoy the game. Have a big heart and look at life positively. यूं तो दुनिया ढेरों सवाल हमेशा सचिन तेंदुलकर से पूछती आई है, लेकिन सचिन कभी खुद नहीं बोलता है तो सिर्फ उसका बल्ला, और ये सबसे कहता है कि सपने देखो, सपने सच जरूर होते हैं। This is Rehan Siddiqui. I would like to invite you to listen to the first ever exclusive interview of Sachin Tendulkar, live and exclusive on Hum Tum Radio. Hi, this is Sachin Tendulkar and you're listening to Hum Tum Radio with Rehan. याद रखिए, the biggest cricket event in the history of US is only few days away. Cricket All-Star Series will be in Houston on the 11th of November at the Grand Minute Maid Park. This will be the first biggest ever Desi event at the Minute Maid Park. Global cricket icons like Sachin Tendulkar and Shane Warne will be headline and lead their team into the battle on the cricket fields. A star-studded lineup of renowned cricket players from around the world, such as Wasim Akram, Sourav Ganguly, Ricky Ponting, Shoaib Akhtar, Brian Lara, Saqlain Mushtaq, and a whole lot more. Yaad rakhiye, this will take place in Houston on the 11th of November at the Minute Maid Park, renewing the famous rivalry between the team captains Master Blaster Tendulkar and King of Spin Warne. An event that cannot be missed. Yaad rakhiye, Wednesday, November 11th, 8 p.m. Buy your tickets now. Go to cricketallstars2015.com. That's cricketallstars2015.com. And once again, taiyar ho jaiye for the first ever radio interview in the US on Hum Tum Radio with the one and only Sachin Tendulkar. Well, ladies and gentlemen, we have the honor to have Sachin Tendulkar on the air with us on Hum Tum Radio. And first, I would like to thank him from the bottom of my heart and everyone here in Houston that he's making his first ever radio appearance in Houston, Texas. Sachin, welcome on air with Hum Tum Radio. Thank you very much. It's a pleasure to be on air with you. Sachin bhai, the biggest cricket event in history of US is only days away, and this is going to be a very, very major event. We're expecting thousands and thousands of people on the 11th of November at the Grand Minute Maid. This event mein you're going to be there, and of course we're all very much looking forward for it. What is the concept behind All-Star Cricket? See, last year in the month of July, there were quite a few retired cricketers, and then post-match we got together there in the long room and just generally spoke about how wonderful it was to be back again on the field. And while those conversations, I realized that we may have retired, but the passion for the game and the love for the game is very much alive. So that got me thinking, how can we use this energy, this positive energy, and this has to be utilized somewhere. And that's when I started thinking about Cricket All-Stars matches. And I spoke to Warne, where even something that experience stayed with Warne as well, fantastic experience. And Warne was thinking simultaneous, and we decided that we should, the dream is to globalize cricket. Now, why not get all the retired cricketers together and play exhibition games everywhere in the world?
And then we wanted to start with America because there's a lot of from India who've gone to America, gone on to become big doctors and successful people. But unfortunately, they don't have access to going to cricket stadiums there or watching cricket matches live inside the stadium. The only way to stay connected to cricket is via internet, following scorecards and watching few highlights here and there. So we wanted to give them this experience, and then along with them, also Americans, because these friends, when they went to America in the 90s, had no idea about baseball or basketball. But their American friends took them to stadiums and made them watch baseball and basketball, explained to them about both these sports, and they started following baseball and basketball. So maybe it's time for those Indian guys to reciprocate and then get Americans excited about cricket. One thing I can definitely say that history is about to be made in the world, because never ever in the history of US cricket ki itni baat hui thi kabhi bhi. How you have made it so popular, not just among the South Asians, our community, but also I see there has been a major interest from all across the US, even from the mainstream arena. I've never seen people going crazy, just not from Houston. I mean, there are people that are flying into Houston from all across the US, and you are the one, who took this initiative. So how does it feel? Fantastic. First of all, I'd like to all the people of America for showing so much interest and having covered Cricket All-Stars extensively. That is something we all players, appreciate from the bottom of our hearts. We are looking forward to being there and producing some cricket, entertain people, engage them in the 3 matches that week. And we would like to run clinics and get even school children involved and get them engaged and understand more about cricket. There are 28 superstars who've had a wonderful career, and there is loads of knowledge and experience to share with the youngsters. And the idea is to be there and enjoy ourselves and wonderful memories. Well, one thing that I will absolutely say over here that, what can be a better occasion than Diwali? Because we're going to not only be celebrating Diwali, magar upar se watching the cricketing firework at the Minute Maid. All Houstonians are just looking forward for it because you are making history for everyone in Houston. Or ek to all-star cricket, then bringing all these legends of the cricket world. And above that, your presence being there, and then at the Minute Maid, and then Diwali. I think what can be all these special, moments and making this occasion so grand? Absolutely. I've never celebrated Diwali in America. So it is like how, people are going to see us for the first time. I'll be celebrating Diwali also for the first time in America. And it's something we should all get together to celebrate. It's a big festival. Excited about our tour. Houston is a place where it's got amazing history, and we would all want to be part of creating history as well. Cricket at this magnitude is happening for the first time, and we want to, as I mentioned, leave fond memories with people. Honestly, this trip is something that I'm really looking forward to. And on behalf of Cricket All-Stars, let me assure all the listeners that people are players. When I called them, they said, "What took you so long to think about this fantastic idea?" So they all are excited to be there and produce some amazing cricket. On Humtum Radio, we have Sachin Tendulkar on the air with us, who is going to be in Houston on November 11th, and that's going to be at the Big Minute Maid. इस event के हवाले से details and all information हम आपको provide करते रहेंगे. Sachin, what is your message for Houstonians and everyone across the US who's listening to this interview? I am extremely excited to be there, and I know that Americans love sport. Cricket should not be any different case. I hope to see you soon, and
appreciate all your support, and I look forward to seeing you soon. Have you ever been to Houston before, or Texas, or will this be your first time? I have not been to Houston before, so this is the first time. I'm looking forward to being there. I can absolutely say that everyone is looking forward to give you that grand welcome. Let me tell you one thing about Houston. Whether it's the mega stars or it's the cricket stars, Houston has been the most welcoming city in the US. And we will show you by the numbers of people and the energy और जिस तरीके से हम आपको welcome देंगे और इस event को grand success बनाएंगे, we'll show you what Houston is all about. Fantastic. Hello. Thank you. Hi, this is Sachin Tendulkar, and you're listening to Hum Tum Radio with Rehan. Thanks for your support. Looking forward. Thank you. Bye-bye.